Hello students, welcome to the channel. I'm Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. Please share and subscribe the channel in order to keep getting all the important literature information. These are our contact details. You can contact to join our online or offline classes. आज हम कवर करने जा रहे हैं डिजेक्शन एंड नॉट बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये एक बहुत ही फेमस पोइट्री है फ्रॉम अ फेमस पोएट ऑफ कोर्स। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम्स में दोबारा कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर नियर बाय यू एंड कीप ऑन नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग बीइंग टोल्ड इन दिस वीडियो। फर्स्ट पार्ट में वी विल गो फॉर द समरी, सेकेंड पार्ट में वी विल गो फॉर द इम्पॉर्टेंट आरटीसी फ्रॉम दिस पोम, एंड in the third part, we will go for all the rhyming schemes, meters, and literary devices uses in this poetry. So let us start the video now. I told you this poetry is written by Samuel Taylor Coleridge, जिनको हम शॉर्ट में थ्रू आउट द वीडियो ST Coleridge बोलकर एड्रेस करेंगे. He was born on 21st October 1772 and died 25th July 1834. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं जैसे कि UGC नेट या फिर MA एंट्रेंस, तो भी आपको मेरे सभी वीडियोस बहुत ही काम आएंगे. आई ट्राई टू प्रोवाइड एज डिटेल इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल सो दैट यू गाइज डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर एल्स अदर देन माई चैनल. सो स्टार्ट करते हैं ST कॉलरिज के इंट्रोडक्शन के साथ. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, अ लिटरेरी क्रिटिक, अ फिलोसोफर एंड अ थियोलॉजियन. थियोलॉजी एक सिस्टमैटिक ब्रांच है जिसमें डिवाइन और रिलीजियस बिलीफ्स की स्टडी की जाती है. अब बात करते हैं ST कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की रिलेशनशिप के बारे में. विद हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मोमेंट इन इंग्लैंड एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ लेक पोएट्स एज वेल. लिरिकल बैलेट के बारे में मेरा एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो भी है जिसको आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद. अभी मैं आपको शॉर्ट में ST कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट के बारे में बता देती हूँ. लिरिकल बैलेट विद अ फ्यू अदर पोम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बाय बोथ ऑफ दीज, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 एंड इट इज़ जनरली कंसिडर्ड to have marked the beginning of the English romantic movement. अब बात करते हैं उनके ग्रुप की, द लेक पोएट्स. द लेक पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ English poets who all lived in the Lake District of England, United Kingdom, in the first half of the 19th century. As a group, they followed no single thought or single rule of literary practice, but still they were called lake poets. The three main figures of what has become to known as lake poets or lake school were William Wordsworth, ST Coleridge and Robert Southey. पोएट्स के साथ कुछ दूसरे पोएट्स भी एसोसिएटेड थे. दे वर एसोसिएटेड विद सेवरल अदर पोएट्स एंड राइटर्स इंक्लूडिंग डोरोथी वर्ड्सवर्थ who was the sister of Wordsworth, William Wordsworth, Charles Lamb and Mary Lamb. They were also brothers and sisters. Charles Lloyd, Hartley Coleridge, the son of ST Coleridge, John Wilson and Thomas De Quincey. They were first described as the lake poets in the Edinburgh Review in August 1817. This was a Scottish magazine that was published from 1802 to 1929, and it contributed to the development of modern periodical and to modern standards of literary criticism. Dejection was written by ST Coleridge on 4th April 1802 when Dorothy and William Wordsworth, Dorothy the sister of William Wordsworth, were on his visit. And it is a personal kind of poetry जिसमें poet ने अपना पूरा distress of soul mention किया. And the poet says that he has lost his creative energy, he has lost his poetic talent which nature had given to him at the time of his birth. This poetry is in its original form was written to Sarah Hutchinson, a woman who was not his wife, and this discusses the feeling of love for her. And the various versions of this poetry describe his inability to write poetry and living in a state of kind of, you can say, paralysis. But published editions of this poetry remove his personal feeling and any mention of Hutchinson.
Sarah was the younger sister of Mary Hutchinson. Mary Hutchinson, who got married to Wordsworth in 1802 itself. Sarah lived with her sister and brother-in-law Wordsworth for many years, and Coleridge, however, fell deeply in love with her after meeting her in 1799. Nothing came out of this kind of love. It was a one-sided, and Sarah seems to have been fond of Coleridge, but uh, was in many ways a good friend to him, just a good friend. She did not seem to have desired him physically or romantically or loved him, certainly not with the same intensity that he desired her, he loved her. जब ये पोइट्री लिखी गई थी तब कॉलरिज जी ओपियम के भी एडिक्शन में थे। ओपियम के एडिक्शन के बारे में आपने कुबला खान में भी पढ़ा होगा। वो अपनी शादी से भी नाखुश थे, एंड ही हैड फॉलन इन लव विद सारा हचिंसन, and intended originally as a letter in verse to Sarah, who is referred to by the anagram Asra as well, ASRA. He has changed the spelling. It describes his complaints and fears with great emotional intensity. The speaker is afraid that his poetic powers are waning, are fading, and that he no longer responds intensely to nature as he used to do earlier. डिजेक्शन का मतलब समझते हैं। हमारी पोइट्री शुरू ही इस क्लेम के साथ होती है कि पोएट इज़ फीलिंग डिजेक्टेड। डिजेक्ट एंड रिजेक्ट आर टू फॉर्म्स विच आर कॉमनली कन्फ्यूज। इनका मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। रिजेक्ट का मतलब समझते हैं पहले। रिजेक्ट मीन्स टू डिसमिस समथिंग, टू रिफ्यूज समथिंग, समथिंग और समवन एज इनएडिक्वेट, अनएक्सेप्टेबल और फॉल्टी. On the other hand, deject or dejected means feeling sad or depressed at some kind of rejection. समझते हैं। और एक तरीके की लिरिक पोइट्री होती है जिसमें टिपिकली किसी सब्जेक्ट को एड्रेस करके पोइट्री लिखी जाती है। जस्टिफाई करते हैं टाइटल को। द टाइटल डिजेक्शन एंड ऑड माइट इम्प्लाई दैट द स्पीकर इज स्पीकिंग टू डिजेक्शन ऑफ हिमसेल्फ. This is when the speaker addresses an abstract or non-human object, it becomes an ode, and the speaker addresses the lady throughout this poetry, although she is not present, but the majority of the poem indicates a kind of soliloquy. The writer is talking to himself and telling the readers about his feelings. Now we will know the story behind the poetry. Already marriage, Coleridge had met Wordsworth and he fell in love with another woman, Sarah Hutchinson, who ironically was the sister of Wordsworth's fiancée at that time, and Coleridge felt kind of trapped in a loveless marriage also at that point of time. Coleridge को अपनी marriage बिल्कुल loveless लगती थी, and this loveless marriage motivated him to write Dejection and Ode because he felt real kind of despair over not being able to be in a relationship with a woman he really loved, Sarah Hutchinson. Coleridge actually published this poetry on October 4, 1802, which was his 7th wedding anniversary and the day of Wordsworth's wedding. Please do watch summary and explanation of important lines, important artifices from this poetry.